जय हिंद। ए क्लास में पढ़ा 375 रु 500 नंबर क्वेश्चन पर्यंत देखा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बार बार परीक्षा आसी सारी आगामी एग्जाम में आसवा संभावना रही। आम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 1 रु 374 नंबर पर्यंत क्वेश्चन देखी सारी ये लास्ट पार्ट रहा 500 नंबर क्वेश्चन पर्यंत रहा। तो देखो फास्ट इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज मेंशन। को आर्टिकल मेंशन अछि ना आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 रे मेंशन अछि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच कॉन्टिनेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोरल रीफ जोटा कि ग्रेट बैरियर रीफ कहे ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आर लोकेटेड। देखो ये तीनटा क्वेश्चन ही परिबो किंतु गोटे लाइन रे दे देछि। तो यहाँ हूँ ऑस्ट्रेलिया रे लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ जोटा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज with those elected by the people and those democratic कौन कह जाए डेमोक्रेटिक कह जाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच लैंग्वेज डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873। गुलामगिरी टा ज्योतिबा फुले को लैंग्वेज लिखिथिले ना मराठी लैंग्वेज लिखिथिले गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच सेशन आर वाटरमेलन मस्कमेलन कोकम्बर एटसेट्रा प्रोड्यूस इन इंडिया। सो जी जेज सीजन रे वाटरमेलन मस्कमेलन कोकम्बर एटसेट्रा कौन प्रोड्यूस हुए इंडिया रे बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड। सो जी मोहेंजोदारो आंसर कौन मोहेंजोदारो हैला ग्रेट बाथ जोटा गाधोले सेटा मिली मोहेंजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच स्टेट आर मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड। आसाम रो आंसर आसाम कौन अच्छी मानस नेशनल पार्क और हूँ काजीरंगा नेशनल ये दुटा फेमस नेशनल पार्क मन रखिए आसाम रो। आउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारा अच्छी पवितरा बोरा चपरी चक्रशिला लाउकवा ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच स्टेट संभल द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड। এটা হচ্ছে সম্ভল যেটা কি কোটি সম্ভল লেক এটা কি রাজস্থান লোকেটেড সম্ভল কেওলাদিও রাজস্থান লোকেটেড। নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ স্টেট ইজ দ মিত্তুর ড্যাম লোকেটেড ওভার দ কাবেরী রিভার। কাবেরী রিভার উপরে মিত্তুর ড্যাম আছে এটা হচ্ছে তামিলনাড়ু স্টেট মনে রাখবে তামিলনাড়ু রে লোকেটেড কোন মিত্তুর ড্যাম কাবেরী নদী উপরে। নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার ডিড देवेंद्रनाथ टागोर एस्टाब्लिश द तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा 1839 रे देवेंद्रनाथ टागोर एस्टाब्लिश करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड शाह आलम ग्रांट द दीवानी ऑफ बंगाल प्रोविंस दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर जी 1765 1765 रे शाह आलम कौन established Diwan of Bengal province. Next question in which year was the Chicago USA conference on world religious held that included Swami Vivekananda talk on religious on one's its highlights। आंसर होची 1893 ना विवेकानंद स्पीच देथिले चिकागो यूएसए 1893 जोटा कि फेमस लैंड माने फेमस हेतला कोन द ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ America। Next question India has parliamentary form government which is feature borrowed from the dash constitution। को constitution हमें borrow करछे दोचे इंग्लैंड हला इंडिया has a parliamentary form of a government parliamentary form of a government एटा borrow हेची कोठू इंग्लैंड यूके यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ dash माइका माइका रे को हमरे लार्जेस्ट प्रोड्यूस करछ और एक्सपोर्ट भी करछ अधिक माइका। नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ डैश आल्सो कॉल्ड मॉडलमेंट रिफॉर्म सीरीज ऑफ रिफॉर्म मेजर इनेक्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आंसर होची 1909 1909 रासला मॉडलमेंट रिफॉर्म एक्ट। इंडियन फर्स्ट टर्की फिल्म produced in
1931 वाज आलाम आरा मन रखिबे फर्स्ट फिल्म जो थिला ताजे कथा सुना जाउथला तो फर्स्ट टर्की फिल्म हैला आलाम आरा इट होजी 1931 मन रखिबे 1931 नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ डैश होची लॉर्ड कर्जन हैला लॉर्ड कर्जन समय यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास हेतला लॉर्ड कर्जन समय नेक्स्ट झिझिया डांस ओरिजिनेट इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार बिहार रे झिझिया डांस ता ओरिजिनेट हेछि झिझिया डांस किदम्बी श्रीकांत बी साई प्रणीत लक्ष्य सेन पीवी सिंधु हैला साइना नेहवाल ये सब कोन फेमस बैडमिंटन प्लेयर मन के फेमस बैडमिंटन प्लेयर के किदम्बी श्रीकांत बी साई प्रणीत लक्ष्य सेन पीवी सिंधु साइना नेहवाल नेक्स्ट क्वेश्चन Mahalanobis model has been associated with which fiber plan? Mahalanobis model ta second fiber plan रे associated थिला second fiber plan Mahalanobis model देथिले हैला next question Majuli is the largest river island in the Brahmaputra river in which state of India? Assam answer कोन Assam Majuli टा होजी largest river island जोटा की अब स्टेट बोली भी डिक्लेयर कराई छै असम रो कोन माजुली गोटे स्टेट माने रिवर आइलैंड सेटा माने नदी रो कोन गोटे आइलैंड दिखो अछि माजुली सेटा गोटे डिस्ट्रिक्ट बोली घोषणा कराई छै एटा कोड छै असम रे नेक्स्ट मार्मागांव पोर्ट नेचुरल पोर्ट सी पोर्ट इज लोकेटेड इन डैश मार्मागांव पोर्ट जोटा की सी पोर्ट एटा अछि गोवा रे लोकेटेड मार्मागांव गोवा हैला मार्मागांव गोवा नेक्स्ट क्वेश्चन मेगास्थनीज A Greek historian and a diplomat came to India as ambassador for Seleucus Nicator. In which Mauryan emperor court did he came? So, Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya समय Greek historian Megasthenes आस्थले. हला Seleucus I Nicator ambassador ଥିଲେ कि Megasthenes. Next, Muhammad bin Tughlaq transferred his capital from Delhi to Devagiri दौलताबाद दिल्ली जो दौलताबाद की ट्रांसफर करथले मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर करथले नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डैश इन द 5th सेंचुरी नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करथले 5th सेंचुरी कुमारगुप्त नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हिच डे ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड हिंदू कैलेंडर रे होली सेलिब्रेट कर जाय फाल्गुन पूर्णिमा रे केबे फाल्गुन पूर्णिमा रे ऑपरेशन फ्लोट और व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डैश ऑपरेशन फ्लोट बा व्हाइट रेवोल्यूशन को जे मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड कोन मिल्क प्रोडक्शन होची ऑपरेशन फ्लोट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बडा ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल रिलेटेड और मिल्क रेवोल्यूशन है ऑपरेशन फ्लोट बा व्हाइट रेवोल्यूशन तो जनक के थिले फाउंडर वर्गीस कुरियन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्शन function explain the relationship between dash production function explains the relation between initial input and the ultimate output Raja I who assumed the power in 1985 CE and was known as one of the most powerful king in South India belonged to the dash dynasty Raja I से को dynasty रो king थिले चोल dynasty रो थिले कि राजा आई चोल डायनेस्टी हैला नेक्स्ट क्वेश्चन शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायून एंड द कैप्चर गौर इन द बैटल ऑफ डैश बैटल ऑफ चौसा रे कोन शेरशाह सूरी डिफीटेड करले हुमायून को कैप्चर करले गौर हैला को रे बैटल ऑफ चौसा केबे तला 1539 26 जून रे 1539 26 जून रे बैटल ऑफ चौसा आइतला शेरशाह सूरी और हुमायून भितरे Sorry, this is the human colleague. Next question. South Asian leader signed the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Charter at first summit established in Dash in the year 1985. It first हेतला Dhaka in the year 1985. SAARC full form मानो कि South Asian Association for Regional Cooperation हैला first established हेतला Dhaka in the year 1985 ढाका का कैपिटल बांग्लादेश कैपिटल होची ढाका
सार्क वर्तमान हेडक्वार्टर कोड अच्छी काठमांडू नेपाल नेपाल कैपिटल काठमांडू अच्छी तार हेडक्वार्टर फास्ट थिला ढाका जोटे फास्ट समिट भी होता बुझीगला सार्क मेंबर होती 8टा है मन रखिए सर्टकट रे कही दूसरी ट्रिका मन रखु एमबीबीएस पिन 8टा मेंबर होती ए रोचे अफगानिस्तान एम रे मालदीव्स बी रे भूटान बी रे बांग्लादेश एस रे श्रीलंका पिन पी रे पाकिस्तान आई रे इंडिया एन रे नेपाल 8टा हेले कौन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सार्क नेक्स्ट क्वेश्चन The Hornbill Festival is a celebration held every year from 1 to 10th December. कोड एटा सेलिब्रेट कर जाए ना नागालैंड रे हला हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड 1 डिसेंबर 10 डिसेंबर मध्ये एटा सेलिब्रेट कर जाए The procedure for amendment of the constitution in India constitution is borrowed from which constitution को देशर संविधान रो आमे बोरो करथले जे अमेंडमेंट कर परिया हला संशोधन कर परिया जोटा कि आर्टिकल 368 अछि एटा होची साउथ अफ्रीका रो आमे बोरो करथले कोडू साउथ अफ्रीका रो बोरो करथले अमेंडमेंट नेक्स्ट द एडवोकेट जनरल ऑफ द ईच स्टेट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रत्येक स्टेट रो एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट करंती ना गवर्नर ऑफ स्टेट के गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटमेंट करंती एडवोकेट जनरल ऑफ ईच स्टेट नेक्स्ट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी कैन बी calculated by the three method income method expenditure method and a product method or value added method mano the aggregate value of goods and service the produce in an economy can be calculated tinta method je gota hochi income method expenditure method product method ba value added method the average heartbeat rate per minute in normal person is 72 नॉर्मल पर्सन हार्टबीट के थर हुए मिनट की 72 थर नेक्स्ट क्वेश्चन द केमिकल नेम ऑफ अ कॉमन टेबल सॉल्ट फाउंड अबंडेंटली इन सी वाटर इज हला सी वाटर जो मिले हमर कॉमन सॉल्ट हला ता नाउ इज सोडियम क्लोराइड को मिले सोडियम क्लोराइड नेक्स्ट क्वेश्चन द छठ पूजा ऑफ बिहार इज डेडिकेटेड टू व्हिच डेइटी माने को भगवान को पूजा कर छठ पूजा एटा होची सूर्यदेव को पूजा सूर्यदेव को पूजा कर छठ पूजा है बिहार जो गोटे फेमस फेस्टिवल कर चले छठ पूजा सेमती द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश द कॉन्करेंट लिस्ट होची ऑस्ट्रेलिया राशि कोठू ऑस्ट्रेलिया राशि नेक्स्ट क्वेश्चन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश बाय डैश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पब्लिश करे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्यूचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम जो हमें बोरो करछे सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया है नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651 1651 रे फर्स्ट बंगाली फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जोटा कि बेंगल रे सेटअप होता 1651 रिवर ऑफ ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली रिवर कूल कलकत्ता हुगली रिवर कूल अवस्थित नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट 5-year प्लान मेन एम्फेसिस वाज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया द प्लान बिगन इन द ईयर 1 अप्रैल 1951 फर्स्ट 5-year प्लान टा स्टार्ट होता 1 अप्रैल 1951 The first 5 kingdom classification of a living organism was first proposed by Robert Harding Whittaker hala 5 kingdom of a classification living organism first proposed by Robert Harding Whittaker next question the great stupa of Sanchi was built during the reign of which king answer hochi Ashoka The great stupa of Sanchi was built during the reign of Ashoka. Hala. Next question. The Hirakud Dam is built across the river of Mahanadi. Hirakud Dam ta koti Mahanadi upare locate करायची संबलपुर है ओडिशा संबलपुर महानदी नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स राज्य मानकर संघ नेक्स्ट क्वेश्चन
The Keibul Lamjho National Park, which is the only floating national park, এটা হচ্ছে floating national park ହେଲା ପାଣି ଭାସୁଛି in India or world is situated in which state? World ବି କଣ ଗୋଟାଏ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ହିଁ ଗୋଟାଏ floating national park এটা হচ্ছে ମଣିପୁର ଅବସ୍ଥିତ କେବୁଲ ଲାମଝୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମନେ ରଖିବ କେବୁଲ ଲାମଝୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମଣିପୁର ଲୋକେଟେଡ୍ The Kuchipudi form of dance is associated with which Indian states? ହେଲା जो R6 लिखा है सब R5 R7 ये सब रिपीटेड केते थर परीक्षा आछि तो ये 6 थर आछि TCS एग्जाम रे कुचिपुडी होची आंध्र प्रदेश रो कोन लो क्लासिकल डांस हला क्लासिकल डांस मन रखिबे 8 टा काम क्लासिकल डांस होची नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वाइसरॉय अंडर द क्राउन वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और से फर्स्ट वाइसरॉय अंडर द क्राउन लॉर्ड कैनिंग के लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट मैक्सिमम गैप केते रहि परिबो दुटा सेशन पार्लियामेंट रो दुटा सेशन भीतर ना 6 मास भीतर गैप रहि परिबो हैला द मोस्ट abundant inert gas in the atmosphere used in electric bulb and has lowest electron affinity is argon हैला मोस्ट abundant inert gas मोस्ट abundant कोन थाए एटमॉस्फेयर रे इन इलेक्ट्रिक बल्ब रे यूज करा जाए जब कोन पाए ना लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पाए এটা হচ্ছে आर्गन नेक्स्ट क्वेश्चन द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर नेचुरल vegetation and wildlife exist is called आंसर होची बायोस्फीयर है बायोस्फीयर नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान वाज 12th 5-year प्लान जो हेतला ता ऑब्जेक्टिव कोन थला फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हैला ता थला लास्ट 5-year प्लान तापर नीति आयोग आस्तला 2015 नेक्स्ट क्वेश्चन तो पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि scheme launched in 2020 by the Ministry of Housing and Urban Affairs is for which section of the society को सोसाइटी में एटा लॉन्च करतला आत्मनिर्भर निधि बा पीएम स्वनिधि दाउची स्ट्रीट वेंडर जो माने अफेक्टेड हेतले कोविड-19 रे सेमानो पे हैला कोविड-19 रे जो माने अफेक्टेड हेतले स्ट्रीट वेंडर पे जो रास्ता कोड सब बिकंती सेमानो पे हैला The next question the radioactive element which is commonly used in nuclear producing electricity by the nuclear fission is gas and so uranium हैला तो कोन uranium यूज कर जे producing electricity produce करे पे हैला by the nuclear fission सहायता से uranium जो electricity produce कर जे next question the Reserve Bank of India issue currency notes monetary system under dash minimum reserve system अनुसार रिजर्व बैंक करेंसी नोट छापे नेक्स्ट क्वेश्चन द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी बिल्ड द खजुराहो टेंपल बिटवीन 950 to 1050 एडी इन द सेंट्रल इंडिया आंसर होची चांदेला डायनेस्टी कोन चांदेला डायनेस्टी हम बिल्ड करथले खजुराहो टेंपल ला 950 रु 1050 एडी मध्ये रे खजुराहो टेंपल बिल्ड कराई छी खजुराहो टेंपल बहुत सारा मंदिर अछि जोटा कि मध्य प्रदेश रे हला group of monuments hela khajura UNESCO heritage site eta ote next question the school of Indian art developed during the Kushan period which is also known as the Greek Roman Buddhist art school answer hochi Gandhara art Gandhara art next question the standard of living economic growth in a country it is represented by its answer hochi per capita income per capita income definition कोन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना मनुष्य गोटे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री एटा को रेफर करछि पर कैपिटा इनकम माने मुंडो पिछा आय टोटल देश रो इनकम टा को पॉपुलेशन सहित डिवाइड कर देले जन का पिछा एते पड़ो सेटा पर कैपिटा इनकम एटा लोक रो इनकम मानछो नेक्स्ट क्वेश्चन द समर ओलंपिक गेम 2024 आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2024 पेरिस ओलंपिक कोड हेतला पेरिस फ्रांस कैपिटल पेरिस होस्ट करथला 2024 समर ओलंपिक गेम अपन मन कमेंट करंतु 2024 समर ओलंपिक गेम रे इंडिया केतेटा मेडल जीतितला नेक्स्ट क्वेश्चन द सन हिट्स द अर्थ थ्रू आंसर होती रेडिएशन सन हिट्स अर्थ थ्रू रेडिएशन
Next question, the temperate grassland of South Africa are called. Temperate grassland of South Africa କୁହାଯାଏ pampas. ହେଲା କଣ କୁହାଯାଏ pampas ହେଲା। So next question, the tripartite struggle, also known as the Connaught Triangle War, took place in 8th and 9th century between which of these great Indian dynasties? କୋଉ ଦିଟା ଡାଇନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ tripartite struggle ହେଇଥିଲା ଆଉ କାନୋଜ ट्रायंगल वार भी होते कुआजे ट्रायंगल कनौज ट्रायंगल वार कुआजे कोन का भितर तीनटा कोन डायनेस्टी भितर हेतला तीनटा डायनेस्टी होछि पाळ कोन प्रतिहारा और राष्ट्रकूट पाळ द प्रतिहारा द राष्ट्रकूट मध्ये हेतला ताकू कुआजे कनौज ट्रायंगल वार ट्रिपरेट स्ट्रगल बोली कुआजे 8th to 9th सेंचुरी मध्ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of mirror used in automobile to see the traffic on the rear side is मतलब जो मिरर रे गाड़ी रे अपन देखते बाइक कार हला सब मिरर रे कोन यूज हुए ना कन्वेक्स मिरर यूज हुए कोन कन्वेक्स मिरर यूज हुए जोटा दूर हम कोन गाड़ी आस्तरे एटा पाखरु देखा जाय हला जा पड़े अपन से अनुसार गाड़ी साइड कर परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड जंप बॉल, free throw and lay off shot is associated with जो वर्ड होगा जंप बॉल फ्री थ्रो ले ऑफ शॉट ये बास्केटबॉल वर्ड माने गेम स्पोर्ट्स सब टर्म होगा बास्केटबॉल रे सब वर्ड यूज थाए जंप बॉल प्राय तो पड़े बास्केटबॉल हला फुटबॉल हला क्रिकेट हला ता सब स्पोर्टिंग वर्ड स्पोर्ट्स वर्ड्स होगा टर्म सब जानि थवा दरकार माने कि बास्केटबॉल रो जंप बॉल फ्री थ्रो ले ऑफ शॉट ये सब बास्केटबॉल स्पोर्ट्स वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस डांसर गुलाबो सपेरा इज नोन फॉर व्हिच डांस फॉर्म? कालबेलिया कोन कालबेलिया डांस हैला कालबेलिया डांस पई मतलब फेमस डांस थिले गुलाबो सपेरा कोन गुलाबो सपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन constant to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment, hence it is called dash disguise employment hela disguise employment ka boje na this underemployment is hidden in constant to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed, hence it is called disguise employment. Next question, tsunami is not caused by tsunami no cause कोटा नहीं ऑप्शन देछि hurricane, volcanic eruption, undersea landslide, earthquake. आंसर होची hurricane पे सुनामी आसना थाए ठीक है आंसर वोल्केनिक eruption पे हेथि पारे अंडरसी लैंडस्लाइड पे हेथि पाई पारे earthquake पे भी सुनामी आस्थाई पारे hurricane ता आंसर नहीं ठीक है hurricane रीजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article of the Constitution of India is the annual financial statement presented to the Parliament every financial year? आंसर होची आर्टिकल 112 माने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा कि हमें कहू कोन बजट हला बजट तो कोठी लिखाय न थाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखाय थाए सेटा होची आर्टिकल 112 हला आर्टिकल 112। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन गारंटेड द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम को आर्टिकल आंसर होची आर्टिकल 19 कोन आर्टिकल 19 गारंटी करछि राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम हमरो अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद असद अली खान प्ले व्हिच इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद असद अली खान प्ले रुद्र वीणा को वीणा ना रुद्र वीणा प्ले करंती कि उस्ताद असद अली खान रुद्र वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड इन महाराष्ट्र? ब्लैक कॉटन रो सॉइल को कोन कहा जाय महाराष्ट्र रेगुल सॉइल कहा जाय कोन कहा जाय रेगुल सॉइल कहा जाय ब्लैक कॉटन सॉइल को कहा जाय रेगुल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्राउंड वाटर स्टोर at place between the layer of hard rock below water table is called aquifer कहा जाय कोन ग्राउंड वाटर स्टोर at place between the layer of hard rock below water table called। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन होची 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होची इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। What is the name of the autobiography written by the
14 दलाई लामा 14तम जो दलाई लामा थिले ऑटोबायोग्राफी ना थला फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग इन द टीम हॉकी मैच। हॉकी मैच रे टीम में केते जन खेलंती। गोटे टीम रे हॉकी रे 11 जन खेलंती, क्रिकेट रे मध्ये 11 जन खेलंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज भूटान नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। हमर भूटान रो ऑफिशियल लैंग्वेज कोन। ऑफिशियल लैंग्वेज होची कोन जोंगखा। कोन दीटा साइलेंस रे जोंगखा जोंगखा हला जोंगखा। व्हाट इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा टर्म केते वर्ष 6 ईयर केते 6 ईयर थाए हला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया। हमें को टर्म यूज करू ना डिस्करेज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यूज करो हला। अनएम्प्लॉयड जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर टा कोन डिस्करेज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी रो कैपिटल थिला कोन कांचीपुरम। कोन थिला कांचीपुरम थिला पल्लव डायनेस्टी रो कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड अंडर हुम वाज द फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तबे एटा हेतला नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1862 बाय द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड मायो। 1872 रे लॉर्ड मायो द्वारा हेतला कंप्लीट हे पनतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडिया when did Indian constitution came into effect। when did Indian constitution came into effect। तो 26 जनवरी 1950 रे कोन इफेक्ट में लागू हेतला। 26 जनवरी 1950 रे लागू हला हला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the two major rivers which emerge from the Amarkantak plateau but they flow in the different direction। आंसर होची नर्मदा और सन रिवर। नर्मदा और सन दिटा को अमरकंटक प्लाटू रु ओरिजिनेट हेचिंदी, दिटा को डिफरेंट डायरेक्शन रे फ्लो करछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the two popular folk dances of Gujarat performed during नवरात्रि। नवरात्रि रे ओ दिटा फोक डांस गुजरात रे कोन देखा जाय। एटा होची गरबा और दांडिया। गरबा और दांडिया हला। गरबा एवं दांडिया मन होची गुजरात रो फोक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution of India abolishes the concept of title and say no title except for military and academic title shall be confirmed by the state। हमरो constitution को आर्टिकल हमरो जे टाइटल हमें लगे परिबा नहीं हला। नो टाइटल केवल मिलिटरी रे लागि थाए लेफ्टिनेंट हला, इसो लागि थाए जनरल, इसो लागि थाए एकेडमिक टाइटल थाए। तो अलग टाइटल तुम लगे परिबा नहीं जेमति आगु सब राजा महाराजा सब लगौतले। एटा होची आर्टिकल 18 हला। आर्टिकल 18 होची नो टाइटल। टाइटल तुम यूज कर परिबा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना पूर्व किसी यूज कर परिबा टाइटल। Which article of the Constitution of India deals with the right of free compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years right to education। राउची ओचाडेची ना 21A। आर्टिकल 21A रहची। आर्टिकल 21A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कोची कोन इंडिया डोज तो 6 रु 14 वर्ष पर्यंत कोन कंपलसरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स the directive principle of state policy promotion of international peace and security। article 51 article 51 DPSP promotion कोची promotion of international peace and security article 51। next question, which committee was formed to estimate poverty in India। को कमिटी फॉर्म होतला ना तेंदुलकर कमिटी। कोन तेंदुलकर कमिटी देला एस्टिमेट करे पे पोवर्टी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which constitutional amendment act added part IXA the municipalities Indian constitution। एटा होची 74तम constitutional amendment संशोधन आइन हेतला 1993 रे। केते 1993 रे हेतला 74 amendment act 1993 रे, जोटा कि पार्ट IX भाग 9A रे आड होची द municipalities हला। municipalities पार्ट IX भाग 9 हला। नेक्स्ट होची, which country has the lengthiest written constitution। सबटा lengthiest written constitution बहुत लंबा वर्ल्ड होची इंडिया। इंडिया दा written constitution।
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री विल होस्ट द 23rd कॉमनवेल्थ गेम इन 2018 2018 कॉमनवेल्थ गेम कोडी थला ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट रे हैला कॉमनवेल्थ गोल्ड ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट रे थला मनोके भारत रे थला 2010 रे न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनोके हमरा विश्व परिवेश दिवस 5 जून 5th जून इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th जून। Which day is observed as World AIDS Day? World AIDS Day होची 1 डिसेंबर 1 डिसेंबर प्रति वर्ष हमें सेलिब्रेट करू वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फेमस इंडियन डांसर वाज द फाउंडर and director of the Darpana Academy Performing Arts in Ahmedabad that trained students dance, drama, music and puppetry and received Padma Shri in 1965 ताଙ୍କ नाम होची मृणालिनी साराभाई ये गुजरात रो हला मृणालिनी साराभाई अहमदाबाद रे रेड दर्पण एकेडमी करछन जोडी की पिला सिखुछन म्यूजिक प्रॉपर्टी डांस ड्रामा आ तांको पद्मश्री अवार्ड देछि 1965 रे केबे 1965 रे पैसे मन केबे परीक्षा भी आसे केबे तांको कोन हमरा पद्मश्री अवार्ड देथिले पद्मश्री 1965 रे काको मृणालिनी साराभाई को दर्पण एकेडमी तांको फाउंडर थिले दर्पण एकेडमी रो। नेक्स्ट क्वेश्चन Which famous Indian dancer was the title Asthana Nartaki resident dancer by the Tirumala Tirupati Devasthanam Temple, India? So, Yamini Krishnamurti है ला Yamini Krishnamurti जो कि इंडियन डांसर टाइटल चला करो आस्थाना नर्तकी तुमको दे आस्थाना नर्तकी कहो दे यामिनी कृष्णमूर्ति है ला टाइटल टा किए देछि ना तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टेंपल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फेस्टिवल फॉल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मलयाली मंथ ऑफ द मेदम व्हिच ऑकर ऑन द आइदर अप्रैल 14 और 15 ऑन द जॉर्जियन कैलेंडर अनुसार अप्रैल 14 के 15 पड़े वो फेस्टिवल ना बिशु हैला बिशु फेस्टिवल मलयाली मंथ ऑफ मेदम। Next question which form of art is celebrated at the Mando festival of the Goa रो Mando festival go form eta music हैला music art celebrated as a Mando festival in Goa। Next question which gas in its solid state is also known as dry ice रो कोटा हेता है ना कार्बन डाइऑक्साइड is solid state is also known as dry ice carbon dioxide। Next question which gas is used as fire extinguisher कौन यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन which Indian personality was given knighthood by the British monarchy but it was returned by him after the Jallianwala massacre जो Jallianwala massacre हेतला हला अप्रैल 13 1919 रे जालियानवाला मास्कर हेतला कि से टाइटल टाकू रिटर्न कर देथले नाइटहुड उपाधि तंग देथला काकू रविंद्रनाथ टैगोर को देथला से रिटर्न कर देथले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंडियन स्टेट हैज द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश एज पर सेंसस 2011 सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन माने उत्तर प्रदेश होची सबडो इंडिया रो हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट सेकंड होची महाराष्ट्र हला सेकंड होची महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन which is the sacred religious book of the buddhist रो religious book ना होची त्रिपिटक कोन त्रिपिटक हला त्रिपिटक मन रखिबे त्रिपिटक हिंदी क्रिश्चियन को रिलीजियस बुक होची बाइबल हला मुस्लिम को कुरान सेंती बुद्धिस्ट होची त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन which is the state dance of राजस्थान रो स्टेट डांस होची घूमर कोन घूमर हला कालबेलिया भी राजस्थान में सेलिब्रेट कर दे डांस कर दे कालबेलिया डांस राजस्थान घूमर होची स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द थॉमस मुनरो इन 1820 1820 रे हमरो राउटर सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले कि थॉमस मुनरो लॉर्ड थॉमस मुनरो 1820 रे राउटर सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले लैंड रेवेन्यू सिस्टम होची राउटर।
which longitude determine the Indian standard time standard meridian 82.5 degree east ହେଲା 82 82.5 degree east जोटा कि कौन Indian standard time বা standard meridian. Next question, which endocrine gland is known as master gland? Which endocrine gland is known as master gland? ना पिट्यूटरी. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोली कहा जाए. मन के पिट्यूटरी को ना मास्टर ग्लैंड बोली कहा जाए. Which one of the following has the highest value of specific heat and used in hot water bag and car radiator? car radiator यूज कर जाए होला आंसर होची वाटर कोन वाटर को यूज कर जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the constitution of India deals with the fundamental duties of a citizen? এটা হচ্ছে পার্ট আইভি এ রে আছে fundamental duties of a citizen পার্ট আইভি এ রে পার্ট 4 এ রে. Which policy involves integrating the domestic economic with the world economic? So the globalization kono globalization. Next, which Rajput ruler defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain 1191 AD? 1191 first battle of Tarain रे मोहम्मद घोरी डिफीट होते का द्वारा ना पृथ्वीराज चौहान को द्वारा. पृथ्वीराज चौहान 1191 AD रे मोहम्मद घोरी को डिफीट करते फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन 1191 AD. नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedule of Indian constitution has provision relating to disqualification of a member of parliament on the ground of defection? anti defection law ता को शेड्यूल अछि 10th शेड्यूल अछि हम constitution 10th शेड्यूल अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, which scheme is available to people in the age group of 18 to 50 years and the provide risk coverage of 2 lakh in case of a death, the insured due to any reason at an annual premium 330 rupees. आंसर होची प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ହେଲା 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ एज ग्रुप जो रहउछन्ती हमरो जे भी ताको पई ओटे कोन रिस्क कवरेज रहइबो 2 लाख पर्यंत इन द केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन एनुअल प्रीमियम जे 330 लखा से डिपोजिट करछन्ती एनुअल प्रीमियम ताले एटा को स्कीम अनुसार दिया होची प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम अनुसार. नेक्स्ट क्वेश्चन, which state of India has the highest per capita income? को स्टेट रो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम होची आंसर होची गोवा. आंसर होची गोवा. हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कहां रो गोवा रो हला मन के गोवा रो होची हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन, which state share border with म्यांमार? म्यांमार सहित को स्टेट हम इंडिया रो बॉर्डर शेयर करची? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. मन के चारटा स्टेट होची म्यांमार को लागिची अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, which team won the Indian Premier League title 5 times? 5 थर के टाइटल जीती ना मुंबई इंडियंस हला मुंबई इंडियंस 5 थर आईपीएल टाइटल जीती. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of forest is most widespread in India also referred to as monsoon forest? So the tropical deciduous forest. Next question, which type of microorganism cause typhoid? Typhoid cause होची कि बैक्टीरिया हला बैक्टीरिया पई वो टाइफाइड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which reed provide a remedy for a person who has been unlawfully held arrest in prison? आंसर होची habeas corpus. habeas corpus. Who discovered the blood group? blood group की डिस्कवर करथिले कार्ल लैंडस्टेनियर. कार्ल लैंडस्टेनियर डिस्कवर करथिले ब्लड ग्रुप. मन थिबे ब्लड ग्रुप डिस्कवर बाय कार्ल लैंडस्टेनियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the author of the book Unfinished a Memoir? Unfinished a Memoir ए बुक रो ऑथर होछन्ती प्रियंका चोपड़ा जोनास. प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस हला. नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the author of the book An Era of Darkness? An author of An Era of Darkness, the British Empire in India. आंसर होची शशि थरूर. शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से माने मेंबर. तो ऑथर बहिर ना होची An Era of Darkness, the British Empire in India के लिखिसंती शशि थरूर. नेक्स्ट क्वेश्चन, who received the Bharat Ratna in 2001 to become the third Indian classical musician to receive India's highest civilian honor? 2001 रे ताको भारत रत्न दिया कागु उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हला
क्लासिकल म्यूजिशियन सी क्लासिकल म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 रे भारत रत्न रे सम्मानित कराइतला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रिप्लेस द सच्चिदानंद सिन्हा एज चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। सच्चिदानंद सिन्हा को किए रिप्लेस करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सचिन सिन्हा 2 दिन कौन प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो 2 दिन थे सचिदानंद सिन्हा चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेले कौन हमर चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम रे इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फर्स्ट टाइम किए पाइथिला अभिनव बिंद्रा ठीक है शूटिंग रे हैला। तो शूटिंग रे अभिनव बिंद्रा फर्स्ट टाइम ओलंपिक से गोल्ड मेडल आम इंडिया तरफ रु जीतला। आउ नीरज चोपड़ा भी तापरे सेकंड रे नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रो रे गोल्ड मेडल जीतला नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द फाउंडर ऑफ द सुंगो डायनेस्टी। सुंगो डायनेस्टी फाउंडर की आंसर होची पुष्यमित्र। आंसर होची पुष्यमित्र द फाउंडर ऑफ सुंगो डायनेस्टी। मन रखिबे सुंगो डायनेस्टी फाउंडर होची पुष्यमित्र 73 बीसी 185 बीसी 185 बीसी रु 73 बीसी मध्ये पुष्यमित्र सुंगो द टाइम पीरियड हला। ये थला 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन टीसीएस एग्जाम। आगामी आपन को जेकौन एग्जाम अछि ए सब क्लास को देखि निहाती जिबे आपन को रिवीजन हे जिवो। यदि वीडियो भल लगे ताले लाइक करंतु फ्रेंड मन सहित निश्चय शेयर करंतु चैनल नथिले चैनल सब्सक्राइब कर रखंतु फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।